कहीं समवेयर बड़ा, ये जो क्यों हो रहा है, ये इस रैंडम की वजह से हो रहा है, राइट. बट if you will keep like instead of np.pi you can keep it as just like 10 multiply also, so that will also work. But you can see it's giving very high area. So if your case study require these dimensions, so you can go for the facts also. Sir, what is the use of alpha here? I just explained it's used for transparency. It's the value, the lowest value is 0, highest value is 1 for this alpha. So 1 means no transparency. If you make it 1. Okay, as of now, can you see the smaller, even we have smaller circles here, so we can see the smaller value, right? Like, Yes. because it's hidden behind the bigger one. So this is the meaning we keep transparency. If I'll make it alpha is equal to 1, if some lower bubble is hidden behind the bigger one, that won't be shown. You cannot see. But if you will make little bit like zero point 0.9, a little bit transparency, I would say, so you will find some hidden values also. Can you see? Now these hidden circles are showing. जैसे ये सर्कल दिखाई दे रहा है, अगर आप 1 Yes, sir. कर दोगे तो ये पीछे वाला जो सर्किल है जो हिडन है, ये बड़े के पीछे ये दिखाई नहीं देगा. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोअर वैल्यू मींस नो वैल्यूज. कैन यू सी all the bubbles are there, but you have made it zero trans or means almost 100% transparency, means यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है. If you will make at least 0.1, एक रेंज बढ़ा दिया, then you have थोड़ा सा जैसे बादल आते हैं ना, rain way before the rain, so it's a showing now. If you will make 0.3 somewhere, so now it's a more darker. Like if you make it 0.7, so now we have more darkers, right? So we keep it 0.8 along with the proper transparency. The next chart we are going to discuss is pie chart, and let me see what are Hello, the. sir. Yes. Sir, what's the use of this scatter graph? Where we can apply this scatter Yes. graph? So very first use is for the this one to detect the outliers, right? So like outliers means if some points are beyond the range, right? जैसे कि कैसे मैं बताऊं. Okay, let me take instead of 50, let me take only 10 example here. Can you see this larger one? This larger one or these two are, it's a kind of group. This group is following in between 0.1 to 5, and here on the y axis also we have 0.28. बट ये दोनों पॉइंट्स जो हैं दे आर फार अवे फ्रॉम माई ग्रुप. मतलब मेरा जो नेचर है, कैरेक्टरिस्टिक है डेटा का, उससे बहुत ज्यादा ये दोनों ग्राफ बाहर जा रहे हैं, ये दोनों बबल्स, विच मीन्स these two are outliers for my data set. So you can detect outliers, or so we have already discussed what is outlier. Suppose in our group agar ye meeting mein if any candidate who is having 65 years old, so that's not wrong कि learning 65 years में आप अगर वो machine ML और AI सीख रहा है, that's not wrong, but for us this is outlier. Let's say we have very small child in our group. अगर हमारे मीट में अगर कोई if is very 12 years candidate or any 13 years old boy is learning ML or AI, so we will call him as a outlier because we all ranging around 25 to 35 or 22 to 36, right? But these two candidates, those having 12 years or 14 years old or 65 or 70 years old, these two are outliers for us. Although it's justified to learn ML at any age for human being, but we will call it outlier because you cannot say it's a wrong data set, but you call it outlier, right? So this is the first use of this scatter plot. Second use, you can find relationship between. So what is relationship? When you are going towards x-axis, you are increasing y-axis. How much you are increasing? Can you see at the above increasing?
Like as we are increasing x-axis, we are decreasing y-axis also. As we are going towards x-axis, this graph is also increasing towards the y-axis also. So you have some relationship between x and y. So line chart and this scatter chart are mostly used for the this one relationship between these two values. All right. Did I answer your question? Yes, sir, got it. Got it. So now we are moving towards the pie chart. Here we are moving pie chart where the slices will be ordered and plotted counterwise, right? So I'm going to write some labels here. So LABLS labels, and then we have frogs, then we have, okay, let's say we have ducks. In some other elements, we have, let's say, crocodiles. Then we have some fishes also, right? So we have these labels there. Let's say I'm making some sizes here along with these sizes, like say, let's say 15, comma 30, comma 45, comma 10, right? So this summation would be 100%, right? So 15 plus 30 is 45, 45 plus 45, 90, 90 plus 10 is 100, right? So you make sure you are giving the total as 100%. Like partition of each slice is 100 is only. So explode. So I'll explain what is the explode here. So just let me write 0 0.1 here, 0, then 0. So we have four values only explode for the second slide, which is ducks, right? For ducks, we are going to. Now I'm going to figure 1, then we have x is 1, and then I'm going to define here plt dot subplots within the graph. So this is the skeleton of my. So I'm going to assign this x and a axis property. What is the axis property? This is taking pi. So sizes, we have just defined the sizes here, 15, 30, 45. And the second part, it will take explode, and explode is same as explode here. We have defined here. That's 0.1 for the second ducks. And I'm going to take his labels, third parameter, third argument. For us also, it's a labels, right? And I'm going to keep auto precision, auto PCT, and then we have percentage 1.1, and then F, and then percentage, right? It's the precision value. Then I'm going to give another argument. It's called shadow. I'm going to make it shadow as a true, and then start angle. I'll explain all these arguments one by one. What is the meaning of this argument? But let me write the code first, and I'll run the code, and then we'll explain one by one. Then we have axis. This axis 1 will have axis. Here we have axis is equal, right? The equal aspect ratio ensures that pi is drawn as a circle. So we don't have like oval shape or something. So we are going to change finally show that value. What's the problem here? Incomplete. Yes, there is some problem in. Yes, this is another percentage value here. Now can you see just due to this single percentage we cannot find the output. Okay. So here it is the complete pie chart, and you can see frogs 15%, which is the first portion, relevant values. Ducks 30%. Can you see ducks occupying more values here? Crocodiles again 45%. Fishes again 10% here. Now that's it.
sizes is all here. Now explode. What is explode here? Let me. So size you can understand like the ratio of it, right? Let me change the ratio of it. Let's say 25, and this is 20. And can we count again? Yes, 25 plus 20, 45, 45 plus 41, 90, and 100. Now the shape is proportionally divided there. Now we have explode. So explode means it's kind of pizza slice coming out of the circle. If you have this pizza slice which is coming outside the value, so you can give this 0.1. If you need it's more coming outside this value, you can zero point 0.2. Can you see? It's now far away from your pizza, right? So explode means you can want to explode far away from your pie chart. Now I'm having more values. Let's say I am going to keep it zero point 0.5. Can you see it's a more away from this zero point 0.5 from your pizza slide? So this is the subplot areas. Yes. Do we have any question? Sir, if I want to take another like a prop from out of the pie chart, that what can I do? Like which one? This sizes अब value अब or what? Huh? अब जैसे सर आप जैसे जो स्लाइस को अलग कर दिए उसको Hmm. मैं पीसेस को अलग करना चाहता हूँ इसके लिए क्या So करना पड़ेगा मुझे? zero. Just give zero only. नहीं नहीं मुझे फीस को अलग अलग करना So पड़ेगा पाई चार्ट से. he he want to say that if another that the fisher chart want to come out from Oh, that pie chart, so how okay, to do okay, that? okay. Just give fish chart. Fish is at fourth place. I'll give 4 zero point 0.1. Can you ओह, see? इस समझ गए. Right? जिसको करना वही उसी का Yes. नंबर इसी OCD ऑर्डर में है value. उसी को. Huh. Right? So this will come outside. Now one by one these argument sizes. तो यहाँ पे जो ratio है we have all these sizes here. Explode जितना explode आपको करना है, so this parameter is just passed here. This set values. Labels जो उनके ऊपर labels आप चाहते हो. Let's say instead of ducks I'm going to convert into the data science. Here we have like ML, and here we have AI. Let's say so it will show all these parameters. Let's say we have uh, deep learning, right? So it's going to depict all these ML, deep learning, AI, and data science, right? So this is simply labels. Auto pictionary, I will come back here. Let me true make it shadow is equal to true. तो आप ये जो shadow देख रहे हो आप इनके बीच में ये इनका shadow है. Once I will make it false or do not give any shadow parameter, so by default it's a fault. It's a false. It won't give any values, right? So it's a true. So it's giving that values. And now come back here, start angle. So start angle, how much rotation you want to give? Let's say I'm having 180. So can you see deep learning? Now can you see deep position of this deep learning? It's the entire position rotated 180 degree, right? If you can give the like 270 degree, so here we have 270, and this will rotate your entire pie chart to 270 degree apart, right? Now we have excel is equal. Now go back to the auto PCT. What is this? This is your decimal value. Let's say I'm giving 1.1 and 1.3. So 1.3 means total precision, right? Total precision post decimal, right? So like, can you see this 0.01? Let's say I make it instead of 3, I make it 9. Can you see now decimal values are now increased 45 point just 120. In terms of let's say a poll vote in BJP and Congress and other parties, you want to check the voter ratio among all these parties, national political parties, right? You want to see the population in among all these states, percentage ratio. You want to see money loan area in your different banks accounts, right? When money involved,
So then this precision is more important factors. Am I correct? Now you understand each and every parameters there, or did I skip any even a single parameter? सर यहाँ पे एक्सिस कहाँ से आया है? एक्सिस का जो फिगर 1 फिगर 2 आपने जब दिया बार ना, चार्ट में तो बार चार्ट हाँ, में तो एक्सिस आएगा, पाई चार्ट में तो नहीं एक्चुअली ऐसा होता है कि यहाँ पर जो ये सब ग्राफ है ना, ये सब प्लॉट्स है। तो सब प्लॉट्स का आप एक्सिस क्या दे रहे हो और इस एक्सिस की प्रॉपर्टी क्या है वो आप यहाँ से डिसाइड करते हो। जैसे ये क्या है ना, ये सारे एक्सिस ही हैं, ये जो आप पोर्शन जितने दे रहे हो, बट इन सब पोर्शंस के ऊपर क्या क्या प्रॉपर्टी लगेगा, यू विल डिफाइन बाई एक्सिस 1। जी सर। इक्वल क्यों राइट, लिखा है? equal like you need equal part, right? This odd portion like x axis and y axis should be equal, otherwise oval shape भी होता है, like let's say, हाँ हाँ, एक्सिस right? इक्वल होगा। हाँ हाँ, on the both x axis and y axis we will get both the equal axis. ओके सर, समझ गया। So I'm going to share this link, which is GitHub account live. You can go and have the matplotlib in Python, where we have seen all these values there, right? Hello, sir. Yes. Sir, I tried to download the files from the GitHub, but it was not able to download. It always Which shows error. which That the Google Play Store means from the repository, it download the zip file of all the files, but it can't download the single file, means the no, separate. तो ठीक है, फिर आप जिप फाइल करके उसको अब वो कर लो, अनजिप कर लो। बट सर, आप ये वाली जो एक फाइल आपने न्यू ऐड की है ना सर, तो फिर से वो जिप फाइल मतलब पूरी फाइल डाउनलोड हो जाएगी, इससे सेपरेट फाइल नहीं होंगे डाउनलोड। कौन सा न्यू ऐड किया है? अभी ये जो मेट्रो क्लिप की आपने ऐड की है ना नहीं सर। नहीं 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 नहीं, नहीं मैंने ऐड नहीं किया, इट्स ऑलरेडी देयर। ओके सर। आई अपलोडेड 4 months ago. ओके, फिर ठीक है सर। सर जो पावर बीआई पढ़ा रहे हो, उनको कैसे डाउनलोड करना है? Okay, just wait. अरे I'm सर, sharing the link where you will find the official website. हेलो सर। Yes, please. मीन्स आई वांट टू कनेक्ट द पाइथन स्क्रिप्ट विद द पावर बीआई, सो Mhm. हाउ टू डू दैट सर? Sure. I'm going to show that Power BI link. ओके। आपको अगर Power BI का कोई भी कोड लिखना है पाइथन का, नहीं सर, ये जुपिटर और पावर बीआई कनेक्ट हो सकते हैं क्या सर? ये जुपिटर जो पाइथन से स्क्रिप्ट है। मतलब आप Power BI का स्क्रिप्ट यहाँ देखना चाहते हो? नहीं सर, ये जो पाइथन की जो फाइल है हाँ जुपिटर में, तो वो हाँ पावर बीआई में कनेक्ट हो सके, हाँ, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। तो वही आपको समझ ये में आ दिख रहा रहा है आर और पी वाई यहाँ पे? है। यस सर। तो एक तो ये वाले जो दोनों चीजें हैं ये विजुअल के लिए है, आपको कोई भी विजुअल लाना है, जैसे ग्राफ अभी हम देख रहे थे ये सब, है ना। और अगर आपको कोई स्क्रिप्ट चलानी है तो गो टू दी गेट डेटा एंड गो टू दी मोर एंड देन राइट पाइथन। कैन यू सी पाइथन स्क्रिप्ट? यहाँ पे पाइथन स्क्रिप्ट को आप ऑप्शन जैसे ही आप स्क्रिप्ट करोगे वो वैल्यू आपको रन हो जाएगी, राइट? ओके सर। ओके ओके, लेट मी
सर चेक। बट वो पाइथन की फाइल मैंने ट्राई किया था सर, वो हाँ, कनेक्ट ही नहीं हुई थी सर मुझसे। नहीं नहीं, ऐसे नहीं कनेक्ट होगी। सर और अच्छा। एक बार, मुझे मालूम नहीं है। हाँ, जस्ट वेट। सर मैंने वहाँ पे गिट खोल रहा था, इसलिए मैं जानने पे। जस्ट वेट। We have two options here, R and py. So Python visual क्या करता है, it will depict all your values. जैसे आपको कोई भी आपका कोड चलाना है तो आपको ये वाला वैल्यूज देगा, यहाँ पर आप विजुलाइजेशन कर सकते हो, अपना ऐड कर सकते हो पाइथन का कोड, राइट। दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन फॉर विजुलाइजेशन एंड एवरीथिंग, राइट। सेकंड क्या है, आपको कोई स्क्रिप्ट चलाना है तो गेट डेटा, गो टू दी गेट डेटा एंड गो हियर मोर, and then you just type multiple option there, like means thousand options are there, right? So you cannot go for the thousand options. So what will you do, you will just go to the Python, search, write Python in the search bar, you will find Python script. So run a Python script on a local Python installation to import data frame, right? Can you see? It's going to connect in your machine. So when you are going to connect, it's going to script this part, and then ये script जो भी आपका Python का है वो आप यहाँ पे लगा सकते हो. Let me see, अगर हम कोई यहाँ पे values चलाते हैं तो क्या होगा. वैसे तो ये एक स्क्रिप्ट एक डेटा को लेके आता है. So for this your this one, हाँ, see, what's the problem here, we didn't insert the necessary files which is defined above. But C, you will have to include your script. But A, but C. So your Python should already installed in your local machine. Then only you can run this code, right? Python का script जो है already होना चाहिए. Can you see? It's a successfully running Python का script. If you go down, so there will be some options and display options and all. राइट, क्योंकि यहाँ पे कोई ग्राफ है, ये कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए वो कोई वैल्यू नहीं दिखा रहा है. इफ यू डिपिक्ट एनी वैल्यू, सो सर्टेनली इट विल गेट दैट वैल्यूज, राइट. कोई एक ग्राफ है इसलिए वहां पे कोई वैल्यूज नहीं आ रही है. ओके, लेट मी सी सम वैल्यूज हियर. Get data, more Python, go to the Python again, Python script will be enabled, then part B, I'm going to remove this file. Okay, so I can go here also. Delete colors and to copy, but C, click OK. Hmm. Hmm. कोई वैल्यूज वहां पे नहीं है इसलिए वो वैल्यू नहीं दिखा रहा है, अदरवाइज इट विल शो दैट वैल्यूज आल्सो. ओके सर। सर एक राइट, और क्वेश्चन था मेरा। हाँ, प्लीज गो अहेड. सर मतलब जब हम डेटा प्रोसेसिंग करते हैं हम्म. तो जो मेन फाइल है, जो जैसा हम्म. हमने सीएसवी की फाइल लिया है, तो उसमें कुछ चेंजेस होते हैं क्या डेटा प्रोसेसिंग के बाद ओरिजिनल फाइल में, या नहीं होते हैं, सिर्फ पाइथन स्क्रिप्ट में होते हैं? नहीं, ओरिजिनल स्क्रिप्ट में भी होते हैं. इट डिपेंड्स कि आपने इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू कर रखा है. देयर इज अ कोड नेम इन प्लेस, राइट. सो लाइक इन प्लेस, true in pandas, it's a in place panda. In place is equal to true parameter is boolean that is used to modify the original data frame in place, right.
जो आपका ओरिजिनल डेटा है उसमें अगर करना है आपको, तो यू विल हैव टू कीप इन प्लेस ट्रू। इन प्लेस मतलब इसको ब्रेक करो, इन मतलब में, प्लेस मतलब जगह, जहां में वो, जिस जगह में वो सेव है वो जगह पे आप चाहते हो चेंज, तो आप ट्रू करोगे इसे। data frame in place. By default, the data frame drop function returns a new data frame which is specified row and column removed, right? तो आप जो भी चेंज कर रहे हो, जो तो डेटा प्री प्रोसेसिंग में पार्ट कर रहे हो, वो वैल्यू आपको वहां पर चेंज करनी है, तो आप इसे ट्रू करोगे। ओके सर, सर तो इन प्लेस इक्वल टू ट्रू ये कौन से लाइन में आएगा सर स्क्रिप्ट के? आप देखो पेंडास का जो भी आप नोट देखोगे, या हम जब अभी हम जब कोई प्रोजेक्ट करेंगे ना, तब मैं आपको दिखाऊंगा कि हम किसी भी ओके, सीएसवी के ऊपर कोई प्री प्रोसेसिंग कर रहे हैं, तो वो इन प्लेस वाला पार्ट कैसे हमारा वो होता है। क्योंकि मैंने एक डैशबोर्ड बनाया है सर, गिटहब पे हम्म अपलोड भी किया है, हम्म बट वो पाइथन स्क्रिप्ट से कनेक्ट ही नहीं हुआ था मेरा। मैं डेटा प्रोसेसिंग कर रहा था। पाइथन स्क्रिप्ट से कनेक्ट क्यों करना है आपको? पाइथन स्क्रिप्ट अलग चलानी है, फिर वो डेटा सेव कर देना है। ओके, तो वही समझ नहीं आ रहा था सर कि वो अलग से चला के देखो फिर कैसे से हो, अलग से, कैसे। जैसे आपने सब कोड लिख दिया, ठीक है, फिर कोड चलाने के बाद में आपको वो फाइल लेके आनी है पावर बीआई में। पाइथन की फाइल ना? हाँ, आप उसमें एक एक्सपोर्ट फंक्शन आता है एक, तो जस्ट वेट, ओके एक्सपोर्ट फंक्शन जो है वो वैल्यू आपको वो लेके आएगा वहां पर, राइट। एक्सपोर्ट टू बीआई, जैसे आपने सब प्रूफ प्रोसेसिंग कर दिया, राइट, आपके डेटा फ्रेम में आया, तो डेटा फ्रेम डॉट टू एक्सपोर्ट करके एक ऑप्शन आता है, टू एक्सपोर्ट, राइट। और उसमें जैसे न्यू फाइल डॉट सी एस वी आपने ये कर दिया, तो इस नाम से आपकी फाइल जो है आपके लोकल मशीन पे सेव हो जाएगी और वहां पे जाके सेव होगी। जब आपके उसमें सेव हो जाएगी, तब आपको इस फाइल को लेके जाना है पावर बीआई में, इंपोर्ट करना है। जैसे अब यहाँ पे आप गेट डेटा करके सीएसवी फाइल चूज करोगे, तो न्यू फाइल करके जो भी आपके डाउनलोड सेक्शन में होगी वहां से आपको सेलेक्ट करना है। पाइथन को कनेक्ट नहीं करना है पावर बीआई से, ओके सर। राइट। और फिर भी कोई डाउट है तो मैं आपको शो करके दिखाऊंगा, तो आपको वो वैल्यू मिल जाएगी। ओके सर। Do we have another doubt, or I am going to bind this session here? Thank you so much, everyone. सर, वो गिटहब Yes, लिंक कौन से आईडी पे भेजना है, प्रोजेक्ट गिटहब का? आप इसी पे दे भेज दो, एलएमएस पे ही भेज दो, आई विल चेक इट। ठीक है, ठीक है, डन। सर हेलो। यस यस प्लीज। सर मैंने पीडीएफ में कन्वर्ट किया था सर, पावर बीआई का डैशबोर्ड, बट वो अनेबल टू रीड बता रहा है सर मुझे। तो फिर से अपलोड करना पड़ेगा फाइल या कैसे? फिर से आप सेव कर लो, वो पीबीआईएक्स वाली फाइल तो होगी ना? हाँ सर। हाँ, तो आप उससे फिर से वो कर लो, ओके सर। राइट। Do we have any other question, or we are going to bind this session here? Thank you so much, everyone.